Okay, good morning, everyone. We will start with the part two of this chapter, that is the human settlements. And last time we have done till the types of the rural settlements, and we have seen the four different types of rural settlements. Okay, and also we have seen the difference between the rural settlements and the urban settlements, and also we have seen the criteria on the basis of which the rural and the urban settlements are differentiated. Now, next, we will see with the urban settlement. So urban settlements, as we have already seen the difference between the rural and urban. So urban settlements क्या होते हैं? So urban settlements are generally the areas which are compact and larger in size. Compact and larger in size means if you will compare with the rural areas, you will find this area to be more compact. Here the settlements will be very close to each other, and the size of the settlements will be larger than the rural areas. क्योंकि जैसे अगर रूरल एरियाज में आपने देखा होगा कि जो सेटलमेंट्स है जनरली द हाउसेज आर नॉट वेरी मच कॉम्पैक्ट टू ईच अदर, वहाँ पे बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट हाउसेज या बहुत नंबर ऑफ एक लार्ज एरिया में आपको नहीं मिलेगा. बट इन द अर्बन सेटलमेंट यू विल फाइंड द सेटलमेंट्स इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म, और एक बड़े बड़े लार्ज साइज पे आपको सेटलमेंट्स मिलेगा. ओके, सो एज वी हैव सीन द activities in which they are involved. So generally, जो primary activities है, the people of the rural settlements are generally engaged in the agricultural activities, or you can say the primary activities. But in the urban settlements, they are not engaged in any kind of agricultural activities. Rather, they are um, engaged in some other kind of activities like secondary activities, manufacturing हो गया, या फिर tertiary activities, quaternary activities. So these kind of economic activities are carried out in urban areas. Okay, so urban areas are actually it is also connected with the urban rural areas also. Like you have seen कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अर्बन एरियाज जो होता है, ठीक है, सो इस अर्बन एरियाज के जो सराउंडिंग एरियाज है, दे आर सराउंडेड विद द suburban areas or the other rural areas of that places. Okay, so urban areas are connected directly as well as indirectly with the villages and the each other. Okay, so these areas are interconnected to each other. Okay, now next we have to see the evolution of towns in India. तो जो इंडिया में जो towns का evolution कैसे हुआ, in the previous class also we have seen कि ये जो सेटलमेंट्स का जो इवोल्यूशन था वो कैसे था फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू टिल द मॉडर्न टाइम्स. वी हैव सीन कि वो कौन कौन से जो स्टेजेस थे और कैसे इवोल्यूशन हुआ. ओके, सो इफ वी विल सी द evolution of towns in India, so generally this towns in India are divided into three types. Okay, so these are the ancient towns, medieval towns, and the modern towns. Okay, so अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स का, तो आप देखेंगे कि इफ यू विल सी फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड टिल द मॉडर्न पीरियड, you will find that we have the evidences of the different kinds of towns in India. If we will talk about the ancient towns, the very famous, that is the Indus Valley civilization, which uh, is found in this region of India and Pakistan के जो region में ये पूरा जो Indus Valley civilization. So you might have studied in the history also कि ये पूरा जो इनका जो अर्बन प्लानिंग था, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड. ओके, तो इनके जो सिटीज थे वो बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड, एंड आपने देखा होगा कि द हाउसेज वेर बिल्ड इन अ वेरी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, एक बहुत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में उनको बनाया गया था. उनके जो रोड्स थे, दे हैव द ड्रेनेज सिस्टम, वेरी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल. ओके, सो इस तरीके से जो टाउन्स का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, एंड वी हैव द थ्री काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाउन्स. ओके, सो जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो एंशियंट टाउन्स में इवन दे हैव अ वेरी प्लान्ड स्ट्रक्चर. जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अपर टाउन एंड द लोअर टाउन्स, और कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया. अपर टाउन्स में जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स वगैरह होते थे. सो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो अपर एरियाज के जो रीजन है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर एरियाज एंड ऑल. ओके, सो बेसिकली यू कैन से कि जो टाउन्स में का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, इट इज नॉट वेरी न्यू. ये आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, or it is existing in the very older period of time also. Now, as far as the classification we have talked, so it is broadly classified into three types. That is the ancient towns, medieval towns, and the modern towns. So we will see each separately. ये कौन-कौन से जो towns are, what is the basic difference between these towns, and we have some pictures also related to that.
So first we will talk about the ancient towns. So if we will talk about the ancient towns, so जनरली देखेंगे कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं विच हैव द वेरी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हैं एंड you can say कि on the basis of the culture and its religion, uh, it is believed to be existing before thousands of years ago. मतलब जैसे ऐसे बहुत सारे लाइक एग्जांपल आप वाराणसी का ले लीजिए. ओके, सो दिस इज वाराणसी इज कॉल्ड टू बी वेरी एंशियंट टाउन. मतलब ऐसा माना जाता है कि इट इज एग्जिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो ऑल्सो. ये पूरा जो टाउन है इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस आप देखेंगे कि ये इट इज सो ओल्ड that this towns is existing in a very ancient time also. Okay, so there are many such kind of towns existing in India also, ठीक है. जैसे वाराणसी हो गया, यू हैव सीन लाइक प्रयागराज है जो इलाहाबाद है आज का. एंड बहुत सारे ऐसे साउथ इंडिया में भी आपको बहुत सारे ऐसे टाउन्स मिलेंगे विच आर वेरी ओल्ड. ओके, इन वर्ल्ड ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं विच आर वेरी फेमस एंड दे आर वेरी एंशियंट टाउन्स. लाइक वन इन जापान वेरी फेमस, आई थिंक दैट इज क्योटो. क्योटो को अगर आप देखेंगे कि जो क्योटो है इट इज अ वेरी एंशियंट टाउन एंड इट इज वेरी famous in the world for that purpose only. Okay, so these are the uh, classification, and on the basis of that, the first one is the ancient towns. Now next we will see, you can see the diagram also, ठीक है. यहाँ पे एक पिक्चर है वाराणसी का ही. So ऐसे बहुत सारे इंडिया में टाउन्स है विच हैव द कल्चरल एंड द रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इट इज कंसीडर टू बी वेरी ओल्ड टाउन. एक बिहार का भी जैसे गया आपने सुना होगा, बहुत फेमस एंड बहुत ओल्डेस्ट टाउन भी है. ओके, एंड देयर आर मेनी अदर ऑल्सो. एक चेन्नई का एक बहुत फेमस, सॉरी तमिलनाडु का एक बहुत फेमस है, दैट इज द मदुराई. ओके, तो ऐसे बहुत सारे टाउन्स फेमस है फॉर इट्स रिलीजन एंड द cultural importance, and they are very ancient towns. Now next one is the medieval towns. Okay, so medieval towns are generally constructed, or you can say कि it is built upon the ancient towns. जैसे जो हमारे ancient towns थे, okay, generally ऐसे ही towns को they modified that towns, or they uh, developed their own काइंड ऑफ बिल्डिंग्स एंड जो ये सारी जो चीजें थी उन्होंने उसको बिल्ड किया और अपने किंगडम्स को एक्सपैंड जब किया. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम दीज टाउन्स इमर्ज. जैसे एक बहुत आप एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली. ओके, सो दिल्ली इज वन ऑफ द एग्जांपल इन द इंडिया विच इज कॉल्ड टू बी द सीट ऑफ द, जो पूरा इंडिया का जो एक ऐसा रीजन था जहाँ से बहुत सारे डायनेस्टीज या किंगडम्स ने रूल किया. ओके, सो व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली डेवलप दीज एरियाज एज अ हेडक्वार्टर्स. ठीक है, उन्होंने अपने पूरे एरियाज को एज अ हेडक्वार्टर्स और पूरे इस इन एरियाज को दे डेवलप इन अ टाउन. ओके, सो इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया. तो ऐसे बहुत सारे अदर टाउन्स इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका लखनऊ हो गया. तो लखनऊ में जैसे आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड ऑफ टाइम, ओके, सो अवध वाज डेवलप वेरी प्रॉपरली. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग्स हो गए या फिर जो उन्होंने फोर्ट्स बनाए, ये सारी चीजें, ठीक है. सो राजस्थान का जो जयपुर वगैरह है, तो यू विल फाइंड वेरी मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स जो कि मेडाइवल टाइम्स पे इसको बिल्ड किया गया था. ओके, सो दीज वर द कॉल्ड एज द मेडाइवल टाउन्स. ओके, एंड you can see in the picture also कि यहाँ पे एक इमेज है दैट इज ऑफ द एरिया बिसाइड द जामा मस्जिद. ठीक है, तो जामा मस्जिद के आसपास का ये एरिया है एंड इट वाज ओल्ड पिक्चर, और ये इन जो मेडाइवल पीरियड ऑफ टाइम का ही स्ट्रक्चर है. ओके, और इन दिस पिक्चर यू कैन सी लाइक द इट इज ऑफ लखनऊ. ये लखनऊ का एक एरिया है दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड लखनऊ का ये एक एरिया है. और इट इज द, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये जो फेमस आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज वेरी ओल्ड एंड इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग दैट, जो अवध के जो नवाब्स थे दे हैव डेवलप. और ये आज भी देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड एज द रूमी दरवाजा. ठीक है, तो ये रूमी दरवाजा आपको अभी भी लखनऊ में मिलेगा और इट इज कंसीडर टू बी अ वेरी old structures. तो ये these are the examples, some examples of the medieval towns. Okay. Now next one is the modern towns, and modern towns का जो construction था या उसका जो उसको ये डेवलप हुआ, it was
after the advent of the Europeans, when the Europeans started coming to the India. Okay, so generally Europeans first they came to the coastal areas of India. Okay, जब वो इंडिया के coastal areas पे उन्होंने जब अपने ट्रेडिंग सेंटर्स स्टार्ट की. ओके, सो दे स्टार्टेड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स. वहां पे उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर पोर्ट्स बनाए. ओके, सो आफ्टर ट्रेडिंग पोर्ट्स, जैसे आपने देखा होगा कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कैसे उन्होंने एक ट्रेडिंग पर्पस से व्हेन दे केम एंड दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द टेरिटरी, सो दे स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन एंड ऑल. और उन्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. ओके, लाइक वन इन कैलकाटा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उन्होंने फोर्ट्स और चर्चेस बनाना स्टार्ट की. ओके, एंड ग्रेजुअली दे डेवलप दीज एरियाज इनटू अ टाउन्स. ओके, so with the advent of the Europeans and the specifically you can say the Britishers, when they came, so they started making their own structures that was came to be called as the modern towns. Okay, और जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कैलकाटा अगर आप चले जाइए, तो यू विल फाइंड मेनी बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स विच इज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश पीरियड ऑफ टाइम के आपको जो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स है वो आपको इजीली मिल जाएंगे. तो यू विल सी थिंक दैट कि ये पूरा जो सिटी है, इट वाज डेवलप्ड इन सच अ मैनर कि वो लग जाएगा कि इट वाज built during the British period of time. Okay, so there are certain other cities and areas also that is जैसे आप मुंबई को देख सकते हैं, कोलकाता हो गया. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज इंडिया में है जो कि ये जो टाउन्स है, इट वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिशर्स. ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ टाउन्स. इन दिस इमेज यू कैन सी, ये आपका मुंबई का है, जो आज मुंबई का जो सीएसटी है ना, दैट इज द छत्रपति शिवाजी टर्मिनल. ओके, सो इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. और ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो इसका आप आर्किटेक्चर है, वो देख सकते हैं कि ये पूरा एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर पे ही इसको बिल्डअप किया गया है. एंड दिस पिक्चर वाज ऑफ एरिया ऑफ द कोलकाता. ठीक है, कोलकाता के एक एरिया का है. सो दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ द मॉडर्न टाउन्स. ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द अर्बनाइजेशन एंड द पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, तो अर्बनाइजेशन क्या होता है और इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, और ये सारे जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स है वी विल सी. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अर्बनाइजेशन. ओके, so as you can see in the definition that urbanization refers to the population shift from the rural to urban area. Okay, so population shift का क्या मतलब है कि जब आपके rural area से when the people started moving from rural area to urban areas. Okay, so that expansion of the urban areas is called to be the urbanization. तो इस process को क्या बोलते हैं, urbanization. Okay, so this is called as the urbanization, that is the population shift from the rural to the urban areas. So in the previous slide, जैसे इस slide में अगर आप देखेंगे कि population जो अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है वो इंडिया में कैसा है, और क्या उसमें एक चेंज दिख रहा है हमको. ओके, सो वी कैन सी द चेंज फ्रॉम हियर. सो देयर इज अ डेटा given that is from the 1901 till 2011. Okay, so this is the data taken from the census, और ये एनसीईआरटी के ही पेज से लिया गया है. So in this data you can see that the rate of urbanization is gradually increasing in India. ठीक है, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है. और फ्रॉम द ईयर 1901. ओके, सो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ द अर्बन पॉपुलेशन और द अर्बनाइजेशन इन द इंडिया इज इंक्रीजिंग. ओके, यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा. इन दिस ग्राफ ऑल्सो यू कैन सी द पैटर्न दैट द जो रेड लाइन है, दिस इज इंडिकेटिंग द urban population and the green one is indicating the rural population. Okay, so in this graph also you can see कि जो urbanization का जो trend है वो इंडिया में क्या है. Okay, so that red one you can see it is gradually increasing. Okay, and the people from the rural areas generally, जो रूरल एरियाज का जो पॉपुलेशन है, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में द पीपल आर नॉट हैविंग द बहुत वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज या ऐसी चीजें नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दिस दिस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बेटर एजुकेशन हो, so these are the certain factors which are leading the people to shift from the rural areas to urban area. Okay, so these people are moving from rural area to urban area, and this is why the reason.
कि ये जो आपका जो अर्बन एरिया है दैट इज नाउ expanding. Okay, so this from this graph also you can relate. Okay, now अगर इंडिया में अर्बनाइजेशन की बात करें, सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इंडिया में क्या अर्बनाइजेशन का रेट है? सो करेंटली इंडियाज पॉपुलेशन स्टूड एट 1210 मिलियन. ओके, सो इट इज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस की अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो पॉपुलेशन, उसका 31% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इन द urbanized area. Okay, with an urbanization level of the 31.1%. It is the data of the census of 2011. Okay, so what are the initiatives which the government have taken to improve the urbanization or urbanization को promote क्यों कर रहे हैं? Okay, so we will see. So there are certain schemes also which have been mentioned कि कौन कौन से वो schemes हैं या फिर programs हैं जिसको government ने initiate किया to improve the urbanization and increase the urbanization. Okay, so first one is the smart cities. जो smart cities mission है, also एक आप में एनसीईआरटी में भी ये एक बॉक्स में दिया हुआ है, वी विल डिस्कस लेटर. जैसे एक और है अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन. ओके, सो दीज आर द सर्टेन एरिया. जैसे अमृत मिशन है, आपने देखा होगा कि इट इज द अटल मिशन फॉर द रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो दीज आर द सम schemes or the programs related to the urban development. Okay, now the next topic which is given in the NCERT is the classification of towns on the basis of population size. ठीक है, तो population के size के basis पे इंडिया में जो towns है उनका क्या classification है? So we will see. So you can see in this table which is given. So in this table you can see there are the 6 classes which have been given. So each class of the city has been differentiated on the basis of the population size of that area. So कौन सी class जो city होगी, okay, it will be depend upon the area or the population size of that area कि वहाँ पे population size क्या होगा. Okay, so like you can see in the class 1 city. Okay, so class 1 city में जो population का size क्या है? More than 1 लाख एंड उससे ज्यादा. ठीक है, तो 1 लाख या उससे ज्यादा की अगर पॉपुलेशन किसी भी एरियाज में है, ओके, सो दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज द क्लास 1 सिटीज. सो इसी तरीके से बाकी के सिटीज को भी क्लासिफाई किया गया. लाइक क्लास 6 सिटीज को अगर आप देखेंगे, तो यू कैन सी कि क्लास 6 सिटीज उन एरियाज को बोलेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है. दैट इज इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इज लेस देन 5,000, so you can call that city as a class 6. Okay, so on this basis only the cities are classified. Okay, so next topic is the majority of the metropolitan and the mega cities are urban agglomeration. Okay, so this is the statement which is given in the NCERT. So I have taken this statement and we will see कि क्या होता है urban agglomeration. ठीक है, और urban agglomeration क्या होता है उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे कि अर्बन एग्लोमरेशन कैसे जो आपकी जो मेगा सिटीज हैं ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप बाकी के अदर सिटीज से, उसका एक डायग्राम भी है. सो आई विल शेयर दैट ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्लोमरेशन? ओके, सो एग्लोमरेशन का जो अगर आप इसको हिंदी में या फिर अगर इस टर्म को आप देखेंगे, ओके, सो इफ एनीथिंग व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या अगर कोई ऐसी चीज जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनी हो, दैट इज कॉल्ड टू बी द एग्लोमरेशन. ओके, सो अर्बन एग्लोमरेशन का क्या मतलब होता है? See, so if there is any urban area, okay, so urban area is not a isolated area. ऐसा कोई एरिया नहीं होता है कि जो सिर्फ एक एरिया है उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं होगा. ओके, सो जनरली यू विल फाइंड दैट द अर्बन एरियाज आर सराउंडेड विद सो मेनी अदर काइंड ऑफ एरियाज लाइक द सबर्बन एरियाज, टाउन्स हो गए. ओके, सो ऐसे छोटे छोटे और भी उसके सराउंडिंग या उसके आसपास के जो प्लेसेस होते हैं, दिस ऑल कंसिस्टेड टू फॉर्म अ वेरी लार्ज एरियाज or the city that is called as the agglomeration. Okay, so this term agglomeration means it is called as the collection of something. Okay, so यहाँ पे collection किस चीज का होगा? We will see. So on the basis of the this agglomeration, okay,
So an urban agglomeration may consist of any one of the following three combinations. वो किन किन चीजों का बना होगा? A town and its adjoining urban outgrowths. Second one, two or more contiguous towns with or without their outgrowths. And third one, a city and one or more adjoining towns with their outgrowth together forming a contiguous spread. Okay, so we will understand this topic with a diagram. ओके, सो कोई भी जो सिटी है, ओके, या फिर जैसे अगर हम किसी मेगा सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, ओके, तो ऐसा नहीं कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी एक दिन में बन गया या किसी एक स्टेज में आपने एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी स्टैब्लिश कर दिया। ओके, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये होता कैसे है? इट इज फॉर्म विद द एग्लोमरेशन ऑफ सर्टेन थिंग। वो एग्लोमरेशन क्या होगा, यानी वो कलेक्शन किसका होगा? सो इन दिस डायग्राम अगर हम यहाँ से अगर आप फॉलो अप करें, so you can see like this area. Okay, so this area, suppose the first expansion, it becomes a area which is called to be a city. ठीक है, एक city area है। Okay, now this city area, okay, is expanding। तो आप देख लेंगे कि इस city area के surrounding कुछ और भी areas add हो गए। जैसे इस city की वजह से और भी areas, उसके जो surrounding areas है वो grow करने लगे। So you can take it as a some suburban areas। Okay, जैसे अगर आप गाजीपुर में ही देखेंगे तो ऐसा नहीं कि गाजीपुर सिटी कि अगर हम बात करें तो सिटी जैसे ही खत्म होता है तो बिल्कुल रूरल एरिया स्टार्ट हो जाता है। नो, आप अगर देखेंगे कि जहां से सिटी एंड होता है उसके कुछ एरियाज जो या उसके कॉन्टिग्यूअस जो एरियाज होता है, दे आर जनरली नॉट द अर्बन एरियाज बट दे आर नॉट रूरल ऑल्सो। ओके, सो उनका कुछ ऐसा फीचर होता है कि दे आर द सब अर्बन एरियाज। ओके, सो इस तरीके से जो एक्सपेंशन होता है, एंड दिस एक्सपेंशन लेड टू अ मेगा सिटीज। तो इस तरीके से यू कैन सी कि इस पूरे स्टेजेस में अगर आप देखेंगे कि एक सिटी से कैसे एक एरिया एक्सपैंड हुआ, फिर उसके एक्सपेंशन से उसके जो और सराउंडिंग एरियाज एक्सपैंड हुए, छोटे छोटे। ओके, सो दिस ऑल एरियाज collectively they form a larger area that is called to be a mega city or metropolitan city. Okay, so metropolitan city ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में स्टैब्लिश हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया अगर कभी आप दिल्ली जाएंगे, ओके, तो दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि दिल्ली इज अ वेरी ऑलरेडी बहुत बड़ी सिटी है। ओके, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के जो आप सराउंडिंग के जो एरियाज है इट इज अ रूरल एरिया। नो, आप देखेंगे कि दिल्ली के सराउंडिंग में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े सिटीज हैं, लाइक यू कैन से गुरुग्राम, ठीक है, जो गुड़गांव है आज का। तो गुरुग्राम हो गया, मेरठ हो गया, और ऐसे बहुत सारे सिटीज उसके साथ ग्रो कर चुके हैं। सो ऑल दीज द सराउंडिंग एरियाज दे टुगेदर फॉर्म अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, सो दिस इज हाउ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज टेक्स प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बन गया या फिर कोई सिटी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, और दिस इज हाउ इट डेवलप्स। ओके, सो आई थिंक इस डायग्राम से आपको क्लियर हो सकता है, एंड यू कैन रिलेट ऑल्सो कि कैसे वो एक्सपेंशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, एंड हाउ इट लीड टू अ फाइनली अ मेगापोलिस सिटी, और यू कैन से अ metropolitan city. Okay, so now the next topic is the functional classification of towns. तो आपके एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट टाउन्स का यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। ओके, सो एक्चुअली यू नीड नॉट टू गो द डिटेल्स ऑफ दैट, बट आपको इसके कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि जो फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है टाउन्स का, ओके, सो दीज टाउन्स आर एक्चुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक स्पेसिफिक जो फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द जैसे एजुकेशनल टाउन। ओके, सो एजुकेशनल टाउन्स मीन्स द टाउन विच इज फेमस फॉर इट्स एक्टिविटीज लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में अगर आप कोटा की बात करेंगे, तो वेन एवर यू आस्क एनी पर्सन कि आपको कोटा पता है, तो दैट पर्सन विल श्योरली से दैट यस इट इज फेमस फॉर द नीट एंड आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सो वेन एवर इन योर माइंड कम्स अबाउट कोटा, तो आपको एजुकेशन का जरूर एक इमेज क्रिएट होगा। ओके, सो दिस इज हाउ द टाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ओके, सो हियर द लिस्ट इज गिवन, एंड इसको हम डिस्कस करेंगे, बट डिटेल्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी, और वहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटीज, सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल टाउन्स, थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्ट सिटीज, फोर्थ कमर्शियल टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, गैरिसन और कैंटोनमेंट टाउन्स। ओके, सो कैंटोनमेंट टाउन्स क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली ने देखा होगा कि आपने वहाँ पे एक
डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह, जहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा होता है, सो दे आर कॉल्ड टू बी द कैंटोनमेंट और द गैरिसन टाउन। ओके, एजुकेशनल टाउन्स, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, फॉर एग्जाम्पल वाराणसी को आप ले लीजिए। सो इट इज अ famous for religious and for its culture. Okay, so this town is classified tourist town। जैसे कभी भी अगर आपके माइंड में अगर शिमला आता है, तो शिमला इज फेमस फॉर इट्स tourist activities। Okay, so these towns are actually classified on the basis of their functions, and the examples are given in the NCERT also। Okay, so these are the functional classification of towns। One last topic is there is in your chapter, that is the smart cities mission। और एक छोटा सा बॉक्स आपके एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे दिया होगा स्मार्ट सिटी के बारे में। तो जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज फर्स्ट started during the 2015, and what the major objective of the smart city was to transform the 100 cities of India। They have chosen some 100 cities in India, and they targeted that city to make it as a smart city। Okay, so स्मार्ट सिटी उन्होंने किसको बोला, यानी क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा उस सिटीज में क्या चेंज लाना, दैट इज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस। ओके, उस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे जो है, जो एक हाइजीन है, या फिर यू कैन से कि जो क्लीनलीनेस है वो एक उसको इम्प्रूव करना, एंड द सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ऑल्सो। ओके, सो these are the this concept या this idea was came to be called as the smart city mission। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया था। ओके, सो एक्चुअली ये जो पूरी जो स्मार्ट सिटी है, एक 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो आई हैव एडेड द पिक्चर, लाइक वो जो क्या 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, यू कैन सी फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज द कम्युनिटी एट द कोर, सेकंड वन इज द मोर फ्रॉम लेस, थर्ड वन इज द cooperative, sorry, it is corporative and the competitive federalism, fourth one is the integration, innovation and sustainability, fifth one is the technology as means not the goal, and last one is the convergence। Okay, so you need not to go into the details, but actually you must have a basic idea about the smart cities, और इसको कब लॉन्च किया गया, what was the basic things about the smart cities and all। Okay, so this was all about the chapter related to the human settlement, and this chapter is over। So maybe in some other video we can discuss the questions related to the this chapter, and maybe if possible we will discuss the previous year boards question also। Okay, so thank you।